technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. Kharge has sent a strong and uncompromising message to party leaders in Gujarat, calling for the immediate removal of non-performing functionaries. Referring to an internal report that found 19 out of the 41 city and district units lagging in performance, Kharge didn't hold back. He said one rotten mango spoils the whole box, urging leaders to act swiftly and remove the bad mangoes before the entire box is rotten. Taking aim at the party's Bahana lobby, Kharge slammed those who fail to deliver on the ground but are quick to blame voters for electoral setbacks. तो मैं ये इसलिए आते ही मेरे को जो दिए मैं थोड़ा पढ़ा और बोला कि ये क्या है, तो हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी साहब ने बताया, साहब ये परफॉर्मेंस है और ये ऑर्गेनाइजिंग डेवलपमेंट है और ये रैंकिंग है, उन्होंने जो जो काम किया। अब इसी के ऊपर आपका अंदाजा हो और ट्रेनिंग करने वालों को भी मैं बोलूंगा कि इसका ध्यान रखें और जो लोग काम नहीं करना चाहते और आप लोग जनता पे थोपना चाहते हैं तो ये नहीं होगा। अगर ऐसे लोग हैं, मुकुल जी, आप और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मिलके फौरन ऐसे लोगों को निकाल दो, क्योंकि एक सड़ा आम सारे को जो टोकरी में रहते सब आम को खराब कर देता। तो इसीलिए जो जल्दी जाने वाले हैं जाओ, दूसरे को उसमें वहां पर लाइए। Now remember, this isn't the first time that Congress President Mallikarjun Kharge has taken a tough stand on non-performers within the party. Over 5 months back, he had made it clear that those who are inactive and not contributing meaningfully should consider stepping aside. जो लोग पार्टी के काम में हाथ नहीं बटाते, उन्हें आराम करने की आवश्यकता है। जिम्मेवारी नहीं निभाते, उन्हें रिटायर होना चाहिए। All right, my colleague Pragya is joining us with more on this. Pragya, get us more details. This is Congress Chief Mallikarjun Kharge once again saying that one bad mango will spoil the entire box. The BJP has always accused the Congress of making this excuse to cover up for its losses and blaming others. Well, the communication is a two-way process. In fact, this is what many in the Congress would believe, but it looks like that the only top brass is speaking their mind and not listening what the people on the ground and the card on the ground is facing right now. And in fact, it is the data that this was the internal report that Mr. Kharge was reading, and he was also addressing the district president's conclave, and he also said that 19 out of 41 have lacked in their performance and not performing well. And this is, the sentiment that he has echoed, that those who are compromised, because it's Gujarat and many in the top brass believe that many in the Congress are also in touch with BJP, and they also believe that, the BJP is working well under Prime Minister Modi, and they might be compromised. This is a larger, apprehension that the top brass rightly has, and especially when it is, when Gujarat is concerned. This is in Gujarat. This event was taking place in Gujarat, and he said that those who do not want to work and who believe that they are compromised in some way, then the top leadership in the state can remove them, because it is better to remove a rotten mango before the entire box is spoiled. Comparing district president with rotten mango and apple, it doesn't augur well coming from the national president. These are also, this is the team of Mr. Kharge, and in fact, if they had any problem, if he, was available easily for them to speak out, then the Congress would not be facing what it is facing right now in many states and not just in Gujarat. So the kind of sentiment that he is, the kind of messaging that Mr. Kharge is sending across is not likely to be taken well by the cadre of Congress, especially in Gujarat. Okay. And in fact, this is not going to help anyway, because many in the party believe that there are some grievances which needs to be addressed and which are not being addressed, and just blaming the district president won't help, just like blaming the voters won't help.
All right, Pragya, stay with me. I'm going to come back to you. Let's quickly get our viewers what BJP has been saying on this. Remember, the Bharatiya Janata Party viewers has been quick to seize Congress President Mallikarjun Kharge's tough talk on the non-performing leaders, suggesting that the message might be a swipe at Rahul Gandhi himself, pointing to his lackluster political track record and electoral setbacks under his leadership. Referring to Kharge's analogy of rotten mango spoiling the whole box, the BJP has openly asked who exactly is the Congress's rotten mango. खड़गे जी, ये इशारों में किसको संदेश दिया जा रहा है? कौन है जो चुनाव हारने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी उठाने के बदले वोट चोरी कह रहा है और डिल्यूजन में रह रहा है? अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी पार्टी में, कांग्रेस में रेस का घोड़ा है, बारात का घोड़ा है और एक लंगड़ा घोड़ा है। अब रेस के घोड़े 99 चुनाव तो हारेंगे नहीं। बारात के घोड़े हैं या लंगड़े घोड़े हैं, उन्हीं के अनुसार जो लोग 99 चुनाव हराते हैं, या वो खराब आम है खड़गे जी के अनुसार। वैसे कार्यकर्ताओं की तुलना घोड़ों से करना, आम से करना, ये उनकी पार्टी में चलता रहता है। पर खड़गे जी, सच बताइए, ये संदेश किसको दिया है? All right, let me go across to Pradeep Bhandari of the BJP joining me on the phone line this morning. Pradeep Bhandari, your response, your thoughts on what the Congress chief has said. This is not the first time that this is coming in from the Congress's leadership as far as non-performing leaders are concerned within the party. Rahul Gandhi and Mr. Mallikarjun Kharge are seeing an open dissent by the Congress leaders against the anti-India rhetoric of Rahul Gandhi. Mr. Parameshwar goes to the ABVP event. It was Mr. D.K. Shivkumar who sang the RSS anthem. It were the opposition leaders who voted for the NDA candidate at the vice president election. All of this points towards one thing, that there is Mr. Kharge and Rahul Gandhi versus Congress which is taking place. Congress is crumbling as a bloc, and this is why Mr. Kharge is speaking openly against the Congress leaders. What we can clearly see, it is Rahul versus Congress leaders happening inside the Congress party. All right, Pradeep Bhandari, thanks very much. Let me also go across to Amit Chavra, Gujarat BJP chief joining us. Apologies, Congress Gujarat chief joining me on the phone line this morning. Amit Chavra, the BJP has been saying that this is just a cover-up for the kind of losses that your party has faced, for the kind of, inefficiency that Congress's top leadership has shown in several elections. Your response to that? हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष की प्रशिक्षण शिविर में कल खरगे साहब ने बहुत अच्छी तरह सबको मार्गदर्शित किया, प्रोत्साहित किया, और जिस तरीके से गुजरात में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एकदम खराब हो रही है, खुलेआम हत्या हो रही है, बलात्कार हो रही है, किसान परेशान है, युवा बेरोजगार है, हर जगह करप्शन के खिलाफ लोग आवाज उठा रहे। तो उसी बात को लेके खरगे साहब ने बोला कि जो लोगों के इश्यूज को उठाना है, जो पार्टी आइडियोलॉजी को आगे ले जाना है, उसमें कहीं कोई एकाध बंदा उसमें नहीं जुड़ रहा है या इनएक्टिव है, तो ऐसे लोगों को हमें साइड करके नए लोगों को जिम्मेदारी देनी चाहिए। बीजेपी अपने फेलियर्स और अभी जो हमारे लोग नेपाल में फंसे हुए उनको लाने में नाकाम है, देश में सुरक्षा के में नाकाम है, हर तरीके से जब गवर्नमेंट नाकाम है तो इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए खरगे साहब के निवेदन को मिस ब्रीफिंग करके आगे बढ़ा रही है, उसको मिस इंटरप्रेट हो रहा है। मैं मानता हूं कि बीजेपी अपने फेलियर्स और जो करंट इश्यू है उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रही है। ठीक है, अमित चावड़ा जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। The Congress's Gujarat chief joining us this morning, of course, speaking about how the BJP is only trying to distract from the real issues by distorting what Mallikarjun Kharge, the Congress chief, has said. Remember, viewers, he said that non-performing leaders should be taken out of the party. The BJP hitting back at the Congress, saying this is only related to the top leadership not being able to win elections, as well as blaming others for the kind of electoral losses that the party has witnessed. But remember, the Congress has hit back at the BJP, accusing them of being obsessed with Rahul Gandhi. Congress leaders say that the BJP's focus on Rahul is a sign of their fear as they face a determined opposition. In fact, they also describe Rahul Gandhi as a visionary leader committed to taking the party forward.
मैं समझता हूँ कि जो संगठन सृजन का हमारा अभियान अभी भी चल रहा है। 3 राज्यों में अभी हमारे जिला अध्यक्ष में इस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कौन हो और वो कार्यकर्ता की भावनाओं के अनुरूप हो। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो वो हर चीज में सोते जगते उन्हें राहुल गांधी जी नजर आते हैं। राहुल गांधी जी प्रॉपर वे में वीसा आपने दिया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो एक डरी हुई है। और मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी एक दूरदर्शी नेता है, स्पष्टवादी दूरदर्शी नेता है, जिन्होंने संविधान के बारे में बहुत स्पष्टता से जो आज कह रहे हैं वो सामने नजर भी आ रहा है। All right, viewers, let's quickly take you through what Mallikarjun Kharge has said, the Congress chief, on non-performing leaders within the Congress party. Take a listen. तो मैं ये इसलिए आते ही मेरे को जो दिए मैं थोड़ा पढ़ा और बोला कि ये क्या है। तो हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी साहब ने बताया, साहब ये परफॉर्मेंस है और ये ऑर्गेनाइजिंग डेवलपमेंट है और ये रैंकिंग है, उन्होंने जो जो काम किया। अब इसी के ऊपर आपका अंदाजा हो और ट्रेनिंग करने वालों को भी मैं बोलूंगा कि इसका ध्यान रखें और जो लोग काम नहीं करना चाहते और आप लोग जनता पे थोपना चाहते हैं तो ये नहीं होगा। अगर ऐसे लोग हैं, मुकुल जी, आप और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मिलके फौरन ऐसे लोगों को निकाल दो, क्योंकि एक सड़ा आम सारे को जो टोकरी में रहते सब आम को खराब कर देता। तो इसीलिए जो जल्दी जाने वाले हैं जाओ, दूसरे को उसमें वहां पर लाइए। So that statement, viewers, of the Congress chief Mallikarjun Kharge has now given way to a political controversy, with the BJP hitting back at the Congress, saying that it is only being done to shift blame onto others, and they're basically hinting at Rahul Gandhi. The Congress, meanwhile, has responded, saying that BJP's only focus is Rahul Gandhi. They're obsessed with the leader of opposition because they want to distract from the real issues that plague the country. We'll keep getting you more on this political war of words. At this moment, it's time for a short break.